যোৱা ভিডিঅ'ত পাৰ্ট 1টো শেষ হৈছে, গতিকে আজি পাৰ্ট 2টো আৰম্ভ কৰা হ'ব। এয়া মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে লিখা নীলকণ্ঠ পাঠৰ অসমীয়া অনুবাদ পাৰ্ট 2টো। से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। ইয়াত কৰ্ণবেদ সংস্কাৰটো হৈছে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত আছে। আজিকালি কিছুমান ল'ৰাইও তেনেকুৱা কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকৰতো কৰি দিয়ে, কাণ বিন্ধাই দিয়ে অলংকাৰ পিন্ধাৰ কাৰণে। এইটো কৰ্ণবেদ সংস্কাৰ বুলি কয়। তো ঠিক তেনেকুৱা সৰু খৰগোশটোক নীলকণ্ঠই এনেকৈ ওলমাই ৰাখিছিল আৰু কাণটো ফুটা কৰি দিছিল। সেইকাৰণে কৰ্ণবেদ সংস্কাৰটো হৈ গৈছিল, দণ্ডও দিয়া হৈছিল, কৰ্ণবেদ সংস্কাৰটো হৈ গৈছিল। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। আৰু যেতিয়া এনেকুৱা শাস্তি দিছিল তেতিয়া সেইবিলাকে আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমেজালি কৰা নাছিল, কৰাৰ সুযোগ দিয়া নাছিল। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। যেনেকৈ শাস্তি দিছিল সকলো জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিবিলাকক, ঠিক তেনেকৈ মৰমো কৰিছিল। प्राय वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल सा खेलते रहते थे। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰিছিল, মাটিত পাখা দুটা এনেকৈ মেলি দিছিল আৰু বাকী চৰাইবিলাকে ঘূৰি 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 লুকা ভাকু খেলিছিল। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। এদিন হঠাতে জালিঘৰত এটা সাপ সোমাই গৈছিল আৰু জালিঘৰত থকা জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিবিলাক ইফালে সিফালে পলাই গৈছিল, কিন্তু সৰু এটা খৰগোশৰ পোৱালি সাপে ধৰি পেলালে। निगलने के प्रयास में सांप ने अपना आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। সাপটোৱে কি কৰিছিল, পাছফালৰ আধা অংশখিনি মুখত ভৰাই লৈছিল, কিন্তু মুখৰ বাহিৰত সন্মুখৰ আধা ভাগ যিখিনি আছিল সেইখিনিৰে খৰগোশৰ পোৱালিটোৱে চি চি শব্দ কৰি আছিল, কিন্তু শব্দটো ইমানে কম আছিল বা শুনা যোৱা নাছিল যে কোনোবাই গম পাব আৰু দৌৰি আহিব। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ अलग दूरत झूलात हुई असिल। उसी के चौकोने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वो पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। किंतु এই শব্দটো কোনেও নুশুনিলেও নীলকণ্ঠই অনুভৱ কৰিছিল যে এইটো কিবা বিপদৰ সংকেত বা কিবা বিপদত পৰিছে। গতিকে লগে লগে পাখাবিলাক একগোট কৰি সোনকালে ঝোলাৰ পৰা নামি গৈছিল আৰু তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। ইমান বুদ্ধি আছিল নীলকণ্ঠৰ, অনুভৱ কৰিছিল নীলকণ্ঠই যে মই যদি এতিয়া ঠোঁটেৰে আঘাত কৰোঁ সাপক, সেই আঘাতটো সাপক নালাগি খৰগোশক লাগিব পাৰে। তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে কেনেকৈ সাপক আঘাত কৰা যায়। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो आत्मरा हो गया। আৰু ভাবিলে যে এতিয়া সেইটো নকৰি বেলেগ এটা উপায়েৰে সাপক আঘাত কৰিব লাগিব। তেওঁ গৈ নিজৰ পাঞ্জাৰে সাপটোক এনেকৈ ধৰিলে আৰু ঠোঁটেৰে আঘাত কৰিবলৈ ধৰিলে। লগতে কি হৈ গ'ল, সাপটো सांप के फन पर चोच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तब भाविसिल उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोच से इतने प्रहार किए कि वह आधमरा हो गया। सांप तो आधामरा हो गई। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही परा रहा। যেতিয়া আঘাত কৰিছিল নীলকণ্ঠই তেতিয়া সাপৰ যিটো আক্ৰমণ আছিল, যেনেকৈ ধৰি ৰাখিছিল, সেইটো লাহে লাহে ঢিলা হৈ আহিল আৰু খৰগোশৰ পোৱালিটো পৰি গ'ল, কিন্তু পৰি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা নাছিল, তাতে পৰি থাকিছিল। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने मंद केकार से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। राधाई नीलकंठक सहाय करिब লাগিব বুলি
এনেকুৱা অনুভৱ কৰা নাছিল। ৰাধা জানিছিল যে নীলকণ্ঠ অকলে এইখিনি কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰাধা এটা কাম কৰিছিল, সেইটো হ'ল তেওঁৰ শব্দৰে সকলোকে জনাই দিছিল যে জালিঘৰত কিবা এটা অঘটন ঘটিছে। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। সকলে গৈ যেতিয়া দেখিল যে সাপ 2টা টুকুৰা হৈ পৰি আছে আৰু খৰগোশৰ পোৱালিৰ ওচৰত গৈ নীলকণ্ঠই নিজৰ পাখাৰে ঢাকি ৰাখি গোটেই ৰাতি কি দিছিল, উষ্ণতা দিছিল। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। शिवर पुत्र कार्तिक किय मयूरक युद्ध वाहन हिसापे बाছি লৈছিল, এইটো আমি ময়ূৰৰ যিবিলাক গুণ আছে, স্বভাৱ আছে, এইবিলাক দেখি আমি গম পাওঁ। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। সেই কাৰণে ময়ূৰক কি বুলি কোৱা হয়, কলাপ্ৰিয় বীৰ পক্ষী। লগতে হিংসক মাত্ৰ নেহি, ময়ূৰ কেতিয়াও প্ৰয়োজন নহ'লে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ নকৰে। কিন্তু কিছুমান চৰাই আছে যিবিলাকৰ জীৱনটোৱে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰে পাৰ কৰে, যেনেকুৱা চিল আছে, বাজ আছে इत्यादिवर। नीलकंठ में उनकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। नीलकंठर भितरत চৰাইৰ যিটো গুণ থাকিব লাগে সেইখিনিতো আছিলে, লগতে মানুহৰ ভিতৰত যি গুণবিলাক থাকে তেনেকুৱা গুণবিলাকো আছিল। গতিকে मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रखता था। যেতিয়া ছাঁ পৰিছিল, আকাশত মেঘ আহি গৈছিল, তেতিয়া নিজৰ পাখাবিলাক মণ্ডলাকাৰ মানে এনেকৈ গোলাকাৰ বনাই নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেতিয়া দেখা গৈছিল যে নাচত, নৃত্যত যেটা লয় আৰু তাল থাকে, সেইটো নীলকণ্ঠৰ নৃত্যত দেখা গৈছিল। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग सम पर ठहर ठहर जाता था। केতিয়াবা অলপ থামিবও লাগে, কেতিয়াবা এইটো ভৰি উঠাব লাগে, কেতিয়াবা এইটো ভৰি উঠাব লাগে। তেওঁৰ যিবিলাক লয় আৰু তাল আছিল ইমান ধুনীয়া আছিল, সেই কথাখিনি বৰ্ণন কৰিছে মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে ইয়াত। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। राधा नीलकंठर निचिना नाचिब परा नाছিল, तथापि राधार नृत्यतो लय ताल गति छंद आसिल। वह नित्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाई ओर निकल जाती थी और बाएं पंखों को स्पर्श कर दाहिनी ओर। কেতিয়াবা কেতিয়াবা राधा কি কৰিছিল, নীলকণ্ঠ যেতিয়া থিয় হৈ আছিল, পাখাবিলাক এনেকৈ সোঁফালৰ পাখাটো স্পৰ্শ কৰি বাওঁফালে গৈছিল আৰু বাওঁফালৰ পাখাটো স্পৰ্শ কৰি সোঁফালত গৈছিল, এনেকৈ নৃত্য কৰিছিল। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। और এই ঘোঁৰাটোতো এটা লয় আছে আৰু তাল আছে, সেইটোৰ পৰিচয় राधाई दिसिल। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। नीलकंठ केनेকৈ বা অনুভৱ কৰিছিল যে মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে নীলকণ্ঠৰ নৃত্যবিলাক খুব ভাল পায়, তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল, বুজিব পাৰিছিল। সেইকাৰণে যেতিয়া এদিন জালিঘৰৰ সন্মুখত মহাদেৱী বৰ্মাই গৈ থিয় হৈছিল, তেতিয়া নীলকণ্ঠ তেওঁৰ সেই পাখাবিলাক ধুনীয়া ৰামধেনুৰ নিচিনাকৈ ৰঙীন পাখাবিলাক মণ্ডলাকাৰ বনাই, গোলাকাৰ বনাই নৃত্য কৰাৰ কাৰণে সেই নৃত্য কৰাৰ ভংগীত থিয় হৈছিল। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। और সেই দিনাৰ পৰা সদায় মহাদেৱী বৰ্মা জালিঘৰৰ সন্মুখত গ'লেই মহাদেৱী বৰ্মাক নৃত্য দেখুৱাইছিল নীলকণ্ঠই। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। प्राय মহাদেৱী বৰ্মাজীৰ লগত দেশী বিদেশী অতিথিসকল আহিছিল আৰু অহাৰ পিছত
নীলকণ্ঠৰ যিবিলাক ভংগী চলা ফুৰা এইবিলাক চাই সন্মানপূৰ্বক আচৰিত হৈ গৈছিল। कोई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली और কিছু কিছু মহিলা বিদেশী মহিলাই কি কৰিছিল নীলকণ্ঠক এটা উপাধি দিছিল। সেই উপাধিটোৰ নাম হ'ল পাৰফেক্ট জেণ্টেলমেন। আৰু এইটো পৰীক্ষাত মাজে মাজে আহিয়ে থাকে, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ভালকৈ মুখস্থ কৰি ৰাখিবা। বিদেশী মহিলাओं ने नीलकंठ को कौन सी उपाधि दी थी বা अथवा क्या उपाधि दी थी? उत्तरটো হ'ব परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। जी ठोटेरे সাপটোক দুটা টুকুৰা কৰিব পাৰিছে ব্লেডৰ নিচিনাকৈ, সেই ঠোঁটেৰে যেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাৰ হাতৰ পৰা চানাবিলাক অৰ্থাৎ বুট মাহবিলাক লৈ লৈ খায়, তেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাৰ এনে হাঁহি উঠে, কাৰণ খুব কোমলভাৱে খায়। সেইটো কথা কৈছে। ঠোঁট এটাই সেই ঠোঁটেৰে সাপক টুকুৰা কৰিছিল, ইমান কষ্ট দিছিল, কিন্তু সেই ঠোঁটেৰে যেতিয়া দানাবিলাক খায় মহাদেৱী বৰ্মাৰ হাঁহি উঠে, ইমান কোমলভাৱে খাইছিল। আৰু আচৰিত হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাই যে ঠোঁট একে। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फल गছত फल नाথাকিলেও ফুল আৰু পাত থকা গছবিলাক ভাল পাইছিল নীলকণ্ঠই। बसंत में जब आम के वृक्ष सोनाली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। যেতিয়া বসন্ত ঋতু আহিছিল, গছবিলাক আম গছবিলাক যেনেকুৱা নতুন মঞ্জুৰি আহি ঢাকি গৈছিল, অশোক যেনেকুৱা চাৰিওফালে লাল হৈ উঠিছিল, তেতিয়া নীলকণ্ঠক জালিঘৰত ৰখাটো খুব অসুবিধা হৈ গৈছিল, কাৰণ তেওঁ বাহিৰত গৈ সেই সৌন্দৰ্যবিলাক চাব বিচাৰিছিল। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। नीलकंठ और राधार आटाइतকৈ प्रिय ऋतु আছিল वर्षा। मेघों के उमर आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। যেতিয়া মেঘৰ অলপ অহা যোৱা দেখা পাইছিল আকাশত, আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বৰষুণ হ'ব নে নাই। ঠিক তেনেকৈ নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধায়ো বতাহতে, এই যে বতাহ বৈছিল, সেই বতাহতে তেওঁলোকে কেনেকৈ বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল যেতিয়া বৰষুণ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল, কেতিয়া বৰষুণ হ'ব, কেতিয়া বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰিব, তাৰ কাৰণে অলপ অপেক্ষা কৰিছিল আৰু নৃত্য কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকিছিল। মেঘ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। মেঘ যিমানে গৰ্জিছিল, নৃত্যৰ গতি সিমানে বাঢ়ি গৈছিল। মেঘৰ গৰ্জনৰ লগে লগে নৃত্যৰ তাল আৰম্ভ কৰিছিল। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। মেঘৰ গৰ্জন যিমানে বেছি হৈছিল, বিজলী যিমানে চমকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, সিমানে নৃত্যৰ তাল বাঢ়ি গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কেকা মানে ময়ূৰৰ যিটো সুৰ, যিটো শব্দ, সেই শব্দটো মানে লাহেতকৈ ধীৰে 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 বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, বেছি হ'বলৈ ধৰিছিল আৰু নৃত্যৰ তালটোও বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिनी पंजों पर दाहिना पंख और बाएं पर बाया पंख फैलाकर सुखाता। যেতিয়া বাৰিষা থামি গৈছিল, তিতি যোৱা পাখাবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বাওঁফালে বাওঁ পাখাটো আৰু সোঁফালে সোঁ পাখাটো মেলি দি ৰ'দত এনেকৈ শুকাই লৈছিল। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰিছিল, পাখাৰ পৰা পানীৰ টোপালবোৰ পৰি থকা অৱস্থাত ঠোঁটেৰে খাই 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 এজনে আনজনৰ পাখাবিলাক এনেকৈ শুকাই দিছিল। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बाज उठा, ये भी एक करुण कथा है। এই এনেকুৱা আনন্দৰ এটা পৰিৱেশত, আনন্দৰ এটা বাতাবৰণত কিয় বা হঠাতে এটা এনেকুৱা সুৰ বাজি উঠিছিল, নিৰানন্দৰ সুৰ। এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে इस आनंदोत्सव के
रागिनी में, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है, आशय स्पष्ट करो। मैं दी दीम प्रश्न उत्तर बिला, कोनो कथा नहीं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। एदिन সেই बड़े मियार दোकानर सन्मुखेदी महादेवी बर्मा किबा कामत गई आसिल और সেই गाड़ीटोक बड़े मियाँ रखी दिले। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बांधी एनो को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। एबार महादेवी बर्माई भाविसे जे मैं कोनो मयूर पोवालिए हक बा चराइर पोवालिए हक कोनो पिंजरार फालेও नाचाम, সেই পোৱালিবিলাকৰ ফালেও नाचाम। সেইকাৰণে महादेवी बर्माई दृष्टिर केंद्रটো बनाई लैছে बड़े मियार जितो दाढ़ी आसिल, सफेद बगा दाढ़ी लम्बा दाढ़ी आसिल और सूतारे बांधा चश्माटो এইটোৱে চাই আছিল महादेवी बर्माजीए। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। किंतु সেই बड़े मियार भरिर ओसरत जी मयूर पोवाली एटा परि आसिल, मरा चराइर पोवाली एटा परि आसिल, সেইটো नेदेखी रब नोवारिले, देखिए पेलाले। मोरनी राधा के समान ही थी और সেই मयूरটো आसिल राधार समाने। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। और সেই भरिটো भांगी এনেকুৱা अवस्था हो गई जे সেই मयूर पोवालिটো থিয় হ'ব পৰা नासिल। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी और बड़े मियार जो अभ्यास आसिल भाषण दियार, সেই भाषण दियार जो तूफान मेलर निचिना भाषण आरम्भ हो गल, आको चलि थाकिल। देखिए गुरुजी कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह आदमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। এইবিলাক ক'বলৈ ধৰিলে যে চাওকচোন গুৰুজী, যিসকলে চিকাৰী আছে কেনেকৈ চৰাইবিলাক ধৰে, এনেকুৱা কোনোবাই চৰাই ধৰে নেকি? আপোনাৰ কথাটো যদি মোৰ মনত নপৰিলেহেঁতেন এই চৰাইৰ পোৱালিটো তেওঁৰে মূৰত মই দলিয়াই দিলোহেঁতেন, কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ কথা মনত পৰিছে তেতিয়া মই এই আধা মৰা পোৱালিটোকে ৰাখি দিছোঁ। জানো যে महादेवी बर्माजीয়ে তো ময়ূৰক ভাল পায়, গতিকে লৈ যাব। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। और परिणामটো এনেকুৱাই হল যে 7 টকা দি সেই ময়ূৰৰ পোৱালিটো महादेवी बर्माजीয়ে ললে, লগতে ঘৰত আনি महादेवी बर्माजीয়ে পঢ়া লিখা কৰাৰ কোঠালিটোত ৰাখি দিলে। और সেই পঢ়া লিখা কৰা কোঠালিটো কেনেকুৱা হৈ গল, এটা চিকিৎসালয়ৰ নিচিনা হৈ গল। प्रश्न এইটো আহিব পাৰে যে महादेवी वर्मा जी का पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल कैसे बन गया था। ये प्रश्नर उत्तर तो मैं दी दीम, कोनो कथा नहीं। और प्रश्न এইটো আহিব পাৰে যে दूसरी मरनी को ठीक करने में कितने दिन लग गए। ইয়াত আছে কথাটো আছে, पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। 1 महीने। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेरी रही परंतु वह टूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठीक हल किंतु भालকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিলে তেওঁ সেই তেনেকুৱা ভৰিৰে খোজকাঢ়িবলৈ आरम्भ কৰিলে। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और এই দ্বিতীয় मयूरीटोर नाम रखा हल कुब्जा। प्रश्न হ'ব পাৰে दूसरी मरनी का नाम क्या रखा गया, कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। इमान दिन नीलकंठ और राधा एकेलगे आसिल, किन्तु कुब्जा अহাৰ पिछरे পৰা যেতিয়াই राधा और नीलकंठक एकेलगे देखे तेतिया कुब्जा दौड़ी जाए मारिबलै। सोच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। परिणामটো এনেকুৱা হল যে নীলকণ্ঠই কুব্জাৰ পৰা দূৰত থাকিব বিচাৰে, কিন্তু কুব্জা নীলকণ্ঠৰ ওচৰত থাকিব বিচাৰে। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। कोनो जीव जंतु चराइर लगत
কুব্জাৰ মিলাপ নাই, মিলা প্ৰীতি নাই। ঘটনাটো এনেকুৱাই যে নীলকণ্ঠ কুব্জাক নিবিচাৰে, বেলেগ চৰাই আৰু জীৱ জন্তুৰ লগত থাকিব বিচাৰে, কিন্তু কুব্জাই কি বিচাৰে যে নীলকণ্ঠ কেৱল মোৰ লগতে থাকিব। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए और एनेको अवस्थाते राधाई 2टा कणी पारिले, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पाखार तलत लई राधा बही थाके। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे को फोड़ कर टूट जैसे पैरों से सब और चिथरा दिए। जेतियाई कुब्जा जानिब पारिছিল যে राधाई कणी पारिছে, लगे लगे गई राधाक उठाई दी तारपरा নিজৰ ঠোঁটেৰে কোবাই কোবাই আঘাত কৰি কৰি তাৰপৰা খেদি দিয়ে আৰু কণীবিলাক ভৰিৰে আৰু ঠোঁটেৰে নষ্ট কৰি পেলায় আৰু সেই কোঠালিটোৰ চাৰিওফালে ছটিয়াই দিয়ে। इस कोलाहल से और उसे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इफाले নীলকণ্ঠ ৰাধাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, ৰাধাৰ লগত দেখা মাত্ৰই কুব্জাই গৈ আক্ৰমণ কৰে। ইফালে কুব্জাৰ লগত নীলকণ্ঠ থাকিব নিবিচাৰে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত নীলকণ্ঠৰ যিটো আগৰ প্ৰসন্নতা ভাৱ আছিল, আনন্দময় এটা ভাৱ আছিল, সেইটো লাহে লাহে নষ্ট হৈ গ'ল। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा, एक बार कोई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पूछकार कर मैंने उतारा। केतियाबा केतियाबा এনেকুৱা হল, কেইবাদিনো এনেকুৱা হল যে নীলকণ্ঠই জালি ঘৰৰ পৰা বেলেগ ঠাইত গৈ থাকে আৰু কেইবাদিনো খোৱা লোৱা এৰি দি এনেকৈ বহি থাকে। কেতিয়াবা দেখা যায় আম গছত বহি থাকে, কেতিয়াবা দেখা যায় জানলাৰ ওপৰত বহি থাকে আৰু মহাদেৱী বৰ্মাই কৈ 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 মাতি মাতি সেই নীলকণ্ঠক নমাবলৈ বাধ্য হয়। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। যেনেকৈ সদায় মহাদেৱী বৰ্মাই খাবলৈ দিছিল, দানা দিছিল আৰু নীলকণ্ঠ সেই নিজৰ পাখাবিলাক গোলাকাৰ বনাই আহিছিল, দেখা যায় তেনেকৈ আহে, কিন্তু নীলকণ্ঠৰ খোজকাঢ়াটো আগৰ নিচিনা নাই, তেওঁৰ ভিতৰত তেনেকুৱা প্ৰসন্নতা নাই, মনটো তেনেকুৱা আনন্দময় নাই, ভাগৰি যোৱা যেন দেখা যায়, মনটো যেন এনেকুৱা দেখা যায়, শূন্যতা দেখা যায়। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। মহাদেৱী বৰ্মাই ভাবিছিল যে কেইবাদিনৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে বা লাহে 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 সকলোৱে সকলৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰিব। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। एदिन रातिपुৱা মহাদেৱী বৰ্মাই গৈ দেখিলে যে নীলকণ্ঠ তেনেকৈ বহি আছে, যেনেকৈ খৰগোশৰ পোৱালিটোক উষ্ণতা দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ পাখাৰ তলত লৈ বহি আছিল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ বহি আছে। जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। মহাদেৱী বৰ্মাই বাৰে বাৰে নীলকণ্ঠক মাতিলে, মাতাৰ পিছতো যেতিয়া নীলকণ্ঠই কোনো সঁহাৰি নিদিলে, তেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাৰ সন্দেহ হৈছিল যে কিবা হ'ব পাৰে। বাস্তৱ में नीलकंठ मर गया था। আচলতে কি হৈছিল, নীলকণ্ঠ মৰি গৈছিল। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। क्यों मरिल, এইটোৰ উত্তৰ মহাদেৱী বৰ্মা আজিলৈকে পোৱা নাই। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। তেওঁৰ কোনো বেমাৰো হোৱা নাছিল আৰু মূৰৰ ওপৰত যিটো স্তবক আছিল সেইটোৰ ৰঙো বগা হৈ যোৱা নাই বা কোনো ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, ঠিকে আছিল, সকলো ঠিকে আছিল। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৰিলে, নিজৰ শাল চাদৰত নীলকণ্ঠক মেৰিয়াই ল'লে। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौरापाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। और जेतिया गंगात प्रवाहित কৰি দিছিল নীলকণ্ঠক, তেতিয়া সেই পাখাৰ যিবিলাক চন্দ্ৰিকা আছিল সেইবিলাক বিম্বিত প্ৰতিবিম্বিত হৈ গোটেই গংগা নদীখনে যেন এটা ডাঙৰ মৰা চৰাই হৈ গ'ল। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कोई दिन कोने में बैठी रही। नीलकंठक नेदेखी राधा সেই জালি ঘৰৰ কোন এটাত বহি থাকিছিল।
वह कोई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा में के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरम्भ की। দুজনে খুঁজিছিল, ৰাধায়ো নীলকণ্ঠক খুঁজিছিল আৰু কুব্জায়ো নীলকণ্ঠক খুঁজিছিল, কিন্তু দুজনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছিল। ৰাধা খুঁজিছিল মনে মনে, নীলকণ্ঠৰ কাৰণে প্ৰতীক্ষা কৰিছিল, অপেক্ষা কৰিছিল, কোণাত বহি অপেক্ষা কৰিছিল, কিন্তু কুব্জাৰ সেইটো বেলেগ আছিল। কুব্জাই কি কৰিছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰি চাৰিওফালে দৌৰা দৌৰি কৰি নীলকণ্ঠক খুঁজিছিল। এইটো আছিল দুজনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য। যেনেকুৱা মীৰাবাই আৰু ৰাধা দুয়ো শ্ৰীকৃষ্ণক বিচাৰিছিল, কিন্তু পাৰ্থক্যটো আছিল এক প্ৰেম দিৱানী, এক দৰ্দ দিৱানী। তোমালোকে পাবা, সেই কবিতাটোত আছে, পদত্ৰয় কবিতাটোত আছে তেনেকুৱা। ঠিক তেনেকৈ দুজনৰ মাজত খোজাৰ যিটো পাৰ্থক্য, এই পাৰ্থক্যটো আছিল। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वो आम से उतरी ही थी कि कजली एल्सेशियन कुत्ती सामने पर गई। महादेवी वर्माई এটা কুকুৰো পালিছিল, মাইকী কুকুৰ। সেই কুকুৰটোৰ নাম আছিল कजली। এইটো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে মহাদেৱী বৰ্মাজী দ্বাৰা পালতু কুত্তি কা নাম কিয়া? कजली। এদিন কি কৰিছিল, আম গছৰ পৰা কুব্জা নামাৰ লগে লগে সন্মুখত কোনে থিয় হৈ আছে? कजली। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। जार जी स्वभाव, कुब्जार स्वभावे आसिल काको देखिले आक्रमण करिছিল। সেই কুকুৰটোকো কুব্জাই কি কৰিছিল, নিজৰ ঠোঁটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। परिणामत कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। परिणाम स्वरूप की देखा गल जे সেই কুকুৰৰ দুটা দাঁত, कजलीर দুটা দাঁত সেই কুব্জাৰ ডিঙিত বহি গল। इस बार उसका कलह कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। किंतु এইবাৰ कुब्जार जीवन तो आरु बचवा नगल। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। चराई एके, नीलकंठ, राधा, कुब्जा एके प्रजातिर चराई, किंतु तिनिओटार स्वभाव बेलेग बेलेग आसिल আৰু বিশেষতাবিলাকো বেলেগ বেলেগ আছিল, যিটো মহাদেৱী বৰ্মাই জানিব পাৰিলে, বুজিব পাৰিলে, শিকিব পাৰিলে। ৰাধা আপ প্ৰতীক্ষা মে দুকেলি হে। ৰাধা এতিয়াও অকলে নহয়, ৰাধা এতিয়াও দুজন আছে প্ৰতীক্ষাত। তেওঁ এতিয়া নীলকণ্ঠৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কৰি এতিয়াও ভাবে আমি দুজনে আছোঁ। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वो कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपने केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। एतियाও যেতিয়া আহাৰ মাহত আকাশখন মেঘাচ্ছন্ন হৈ যায় তেতিয়া কি কৰে, তেওঁ কেতিয়াবা উঁচা সেই ঝোলাটোত যায়, কেতিয়াবা গছৰ ডালত বহি তেওঁ কি কৰে, নিজৰ শব্দৰে সেই নীলকণ্ঠক মাতি থাকে। তো পাঠটো ইমানেই আছিল। পাঠটো আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ বুজিছা আৰু মনোযোগেৰে পাঠটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। স্কিপ নকৰি গোটেইখিনি চাবা, লগতে কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, এইখিনি আশা থাকিল। আৰু এই পাঠৰ যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে অহা ভিডিঅ'ত গোটেইবিলাক দি যাম। লগতে যিবিলাক প্ৰশ্ন অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন আছে সেই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নবিলাক আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দি যাম। এই কথা দি আজিৰ কাৰণে ইমানতে, ধন্যবাদ। কয় মিনিট হ'ল? 18 স্যার 18 বাজে স্যার।